a table. Select everything from. Chalo, I'll wait for 2 minutes. Of the table and then create a table again? No. So what we are going to use? Our table. 5. I want to add a new column into this table. Let's say phone number maybe. Okay. So are you going to drop the table and then create a table again? No. So what we are going to use? Alter. So let's make a question first. Add a new column in the customer table. Okay. And the column name is phone number, which stores the phone numbers of the customers. Okay. So which statement are we going to use? Alter. What do you want to alter? Alter table. Table name is customer. Okay. Then you want to add a new column. So we have a keyword called add. What do you want to add? What will be the column name? Phone number. What will be the data type? I can either go with cat 10 or I can go with varcat 10, but phone number will always be a fixed 10-digit number, so I can go with character. Okay. Now, since a statement doesn't have any error, let's see whether it works or not. Technically, this statement is like this, 1-line statement. Just to improve the readability, I have a habit of writing it in the 2 lines. It's completely your choice how you want to do it. Okay. Command completed. Let's see the customer table now. Column added. By default, what are the phone number values? Null. Now, how will you update these phone numbers? 1 by 1. There is no shortcut. आपको कंडीशन लगानी पड़ेगी ना बार-बार, where customer ID is this, customer ID is this. Okay. मान लो अगर आपको genders change करने हैं. You have a customer's data of let's say 100 customers and उसमें से 50 मेल हैं. आपको पता है कि कौन-कौन मेल है. उस केस में आप multiple conditions लगा सकते हो. Where customer ID is equals to 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है. But where you have to enter a unique data, it will be done 1 by 1. हम इसमें वैसे नहीं कर सकते जैसे आपने बोला था वहाँ कॉलम नेम स्पेसिफाई क्या आपने कॉलम नेम स्पेसिफाई उसके बाद कॉलम नेम स्पेसिफाई करके फिर वैल्यूज ऐड करो. बट उसके लिए कॉलम भी तो ऐड होना चाहिए ना. वो तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए है ना, एक में नहीं कर पाओगे. All right. So how will you change the phone number? Update. Update what? Table name. Then set is a keyword. What do you want to set? Phone number equals to, since it's a character, so it has to be within the quotes. Okay. कितने ज़्यादा हो गए? Limit if काम हो जाएगा, but memory wastage. काम तो हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, पर वो जो फ्री स्पेस बचा है, it will not be used by anything else. So that is the job of database engineer. He will work around it. Okay, basically तो 1 by 1 है, but he will work with PL, SQL or the other coding languages to combine the output. But let's not get into that. We are not going to do that. Okay. Okay. What next? Where customer ID equals to 101. Okay. Done. Let's see the table now. Done. Okay. Similarly, you will do for the other. So this thing you can complete yourself. Okay. All right. Question number 2. Delete the phone column from the customer table. How will you do this? You don't want the phone number column. Alter table. Table name is customer. Then what? Drop. Delete is for deleting the records. Okay. Drop what? Column 4. Okay. Let's execute. Done. Select statement.
You can see phone number column is gone. Okay. In the last mentorship class, I told you that पहले drop करो फिर दोबारा add कर लेना. But actually, this is the shortcut, the actual method. If you want to delete any column. Clear to everyone? Okay. All right. Now let's see how Excel and SQL are different from each other. Excel versus SQL. Okay. On this side, I'll write about SQL. No, Excel first. And on this side, we'll have SQL. Tell me all the topics that we have covered in Excel. What was the first topic in Excel, guys? Functions. Which function? Aggregate. Whatever aggregate functions you have in Excel, same are there in SQL. So this doesn't have any difference. Same as that of Excel. Second, stop talking, guys. Array functions से पहले बताओ. Number functions. Same as that of Excel. No difference. Third, text functions. Almost same, but few differences. For example, in Excel, we have mid function, or let me write over here on the SQL side. In Excel, we have mid function. In SQL, we don't. We have substring. Number of parameters, the way the input is taken by the middle, everything will be same. Only thing is function name is different. Okay. All right. Then we have, no. The difference of the text functions we're talking about. We have trim function in Excel. We don't have trim in SQL. We have L trim, R trim. That means removing the spaces from the left and the right of the text. Okay. Then we have no. Okay. In the Excel, we have upper, lower, proper. Correct? But in SQL, we have only upper and lower. There is no proper. Okay. Another difference. In SQL, we have substitute, we have replace. Correct? In SQL, we have replace and we have stuff. Okay. Whatever substitute do in Excel, same thing is done by SQL using replace. Whatever replace do in Excel, same thing is done by stuff in SQL. Okay. These are few of the differences of the text functions of Excel versus SQL. Okay. What's the fourth category of function? Date time. Date functions. In SQL, it is same, but few are changed. Or few new, you can say. For example, we have date def. We have date add. Okay. We have date part. We have date name. All these are the different functions of SQL. Okay. जो traditional functions are like month, year, and all those things, those are there, but these are some few of the new of them. In Excel, I don't have a direct option of subtracting the two dates. In SQL, we have that option, and that function is called date def. Okay. All right. What's the next category?
Lookup functions. We don't have lookup functions in SQL. Okay. In order to perform the lookup functions task, whatever we are achieving with the help of lookup functions in Excel, in SQL, you can achieve that with the help of joins. Okay. Then conditional functions. What were conditional functions in Excel? Count if and ifs. Okay. In case of SQL, we don't have if functions. Basically, there is a statement, but that's a part of TL SQL. But in SQL, if you have to do a task, we have case, when, then, else, and. It comprises of 5 keywords. Case, when, then, else, and. वो तो constraint हो गया ना, clause है वो. Okay. All right. Then we have END. Logical functions. What were logical functions in Excel? And or not. In case of SQL, we don't have conditional functions. We have conditional. We don't have logical functions. We have logical statements. And or not without brackets. Okay. Then array functions. What were array functions? We don't have array functions in SQL. So what's the substitute for that? Case, when, then, else, end. Okay. What else did we cover in Excel apart from functions? Topics. That means summaries. Summarization. For summarization in Excel, we work with pivot tables and array functions. When we are talking about SQL, the summarization, the summaries that I have to prepare, we have something called group by. Okay. In Excel, if I have to generate a Boolean output, I can use conditional operators like 5 is equal to 5. So true, false, correct? Same way, if I have to match, or rather, I should not write conditional functions. I should say something called filter. Okay. Now, how do we work with filters in Excel? What are the 2 types of filters in Excel? Text filters and value filters, numeric filters, right? In case of SQL, if you want to apply a filter, we have where or having. This is actually the use case of where and having. Okay, but what is the difference between the two? That we'll see later. Okay. Then we have studied groups and bins. Okay, same thing if I want to do it in SQL. We have case, when, then, else, end. Okay. Anything else we have covered in Excel from the topics? Yes, sorting. We were having 3 types of sorting: ascending, descending, custom, right? In case of SQL, sorting will be done by order by. And there are only 2 types, ascending or descending. Okay. Anything else? Data validation. We were having number validation, text validation, list validations, all those things. How will you do validation in SQL? Yes, constraints. The 7 types of constraints. Anything else? Can I prepare charts using SQL? No, it's only for the analysis, not for the visualization. Okay. Any doubts, any confusions in the differences? Now this will help you to understand and also to learn also कि कौन सी situation में क्या use करना है. ठीक है? Let's close this thing. Okay. We had conditional, I would not say conditional formatting, I would say custom formatting. For custom formatting, we were using control 1, right?
Now, same thing if you want to do, let's say you want to change the data types or something like that. So we have functions for that. And there are two functions for it. One is known as cast, second is known as convert. You want to change the float value to the whole number value. Excel mein to control man karke, you were changing the how the output should look like, correct? But in case of SQL, you have to use these functions, cast and convert. Okay, and these together are known as data type conversion functions. Okay. वो तो select star से हो जाएगा ना, star की जगह column names लिख दोगे, ठीक है? Okay. Anything else? That's it, I think. Okay. The next thing that we are going to start with is the operators. This is something that you will cover in your term 2 also for Python. More or less, it will be same. What are operators? Those who are from programming background. What is an operator? Special? Symbols. Special symbols designed to perform a certain task. Okay. So the definition is operators are these symbols which perform certain tasks. Can you name any two types of operators? Logical operator, Let's see. If I write A plus B, what is an operator here? There plus is the operator. What is A and B known as? Operands, I guess. A comma B are known as operands on which the operator works, or you can call it as variables. But variable SQL means column. So let's not get confused and let's not call it as variables. Operands. Okay. Okay. Types of operators. First one is your arithmetic operator. Arithmetic operator means which performs a mathematical task. Plus, minus, divide, multiply. What does double star mean? Power. Power. Raised to power. Okay. So these are your arithmetic operators. One more is there. Modulus. This will give you the remainder. Okay. If I say 15 divided by 2, answer will be 7. If I say 15% 2, remainder will be 1. This is a difference. Okay. This will be 2 raised to power 3, 8. Okay. 6. वो तो वाइल्ड कार्ड है, बट अकेला यूज नहीं होता वो. Okay, so these are your arithmetic operators. Second category is your conditional operators. Anyone can tell me the alternative name? Yes, comparison operators. One more is there. Relational operators. 3 names. Okay, conditional, comparison, relational. Now it's of certain categories, certain subcategories. First one is known as single value comparison operator. Single value comparison means जब left hand side पे और right hand side पे एक एक value है check करने के लिए. Okay, and the operators are greater than equal to, less than equal to, double equal to means what? And not equal to or angular brackets. Okay, basically ये single ही है, double नहीं होता, double is in Python. Okay, all right, this is single value. For example, if I say 5 greater than 3,
अब ऑपरेटर की लेफ्ट हैंड साइड में कितने वेरिएबल्स हैं? 1. राइट में कितने हैं? तो दोनों साइड पे एक एक है, hence it is known as single value comparison. Okay, it will always result in Boolean value. So here answer will be what? True. Okay. B, second subcategory is multi-value comparison operator. Multi-value comparison, as the name suggests, there are more than values on the other side for the comparisons. Okay, and for the multi-value comparison operators, we have two. One is known as in, second is known as your between. Okay, for example, if I say I want to check whether 5 is available in certain set of numbers, so I can say what? 5 available in. 5 को किसमें check करना है? 2, 4, 5, 10. Answer will be what? Is 5 available in the given set of numbers? Yes. Answer will be true. Okay. Then you have to compare one element with the multiple elements. Okay. You want to check whether the given ages are between 18 and 20. तो उसमें क्या करोगे? Between. So basically it will be age between 18 and let's say 60. Okay, so it is going to be acting like a check कि check करो कि सारी ages 18 से लेके 16 के बीच में है या नहीं. Okay, so what do we understand from here? Whenever you are going to use in के साथ हमेशा क्या use करोगे? Round brackets, always. Okay, when you are going to use between के साथ क्या use होगा? And. Clear to everyone? Okay, I can also say that ये जो brackets हैं और जो commas हैं, they are acting as or. ठीक है? Any doubts in single value and multi value comparison operators? Online guys, any doubt? नहीं होगा, वो Python में होता है. ठीक है? Because in Python we have a certain concept called a tuple list, dictionaries, वो data structures होते हैं, तो यहाँ पे वो चीज नहीं है. ठीक है? Okay, C part. Next is known as wildcard. What are wildcards? Basically, it's a text comparison. Okay, and the wildcard operator that we have is like wildcard operator for text comparison. Okay, and the operator is like used along with certain symbols. Okay, like the first one that we have is square brackets. Second we have is underscore. Okay, and third thing that we have is percentage. Now what is the use that we'll see later. कौन सा वाइल्ड कार्ड कहाँ पे यूज होगा बाद में देखेंगे. ठीक है? Any doubts in the conditional operators? Okay. Then we have logical statements. Operators नहीं बोल सकते हो आप. हाँ, basically you can call operators also, or you can call statements. Operators or statements. And or not. Okay. Then we have something called bitwise. Bitwise operators. Bitwise and, bitwise or, bitwise not. Ampersand, pipe, tilde. Okay, this symbol is where you have your just below your escape key. Okay, pipe symbol, it's just above your enter. Okay, any doubts in the operators? All right, now the question is, what if all these operators are available in a statement? तो पहले कौन सा operator solve करोगे? Okay, so we have something known as precedence of operators. That means which operator should be given the priority.
Everyone remembers BODMAS? Same rule. But it has a certain extension. Okay, first B, O, division and multiplication have the same precedence. Okay. Addition and subtraction has the same precedence. This is BODMAS. ये तो सबने पढ़ा है. अब इसके बाद conditional operators. Which one is coming up first? उसको use कर दोगे पहले. ठीक है? Then not and or. ये है पूरा precedence. Where B stands for brackets. O means यहाँ पे तो ऑफ नहीं मिलेगा, फिर क्या होगा? ऑफ मैथ्स में होता था, सीक्वल में, पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है. O means multiplication or power. Okay. Basically it's this thing, power. Okay. Division and multiplication means divide, multiply, also mod. अब इन तीनों में से सबसे पहला कौन सॉल्व होगा? जो पहले आएगा. ठीक है. Then addition, subtraction, whichever comes first. Okay. Then conditional operator, greater than, less than, like, जो भी पहले आ जाए. ठीक है. When I say that whichever comes first, from where? Left side. Okay. The execution is always from left to right. Okay. For example, if I say, you guys tell me what will be the output. 4 plus 9, 3 into 2 minus 1. Tell me what will be the output. I'll give you 2 minutes, then I'll ask the answers. Huh? Option A, 9, okay. Yes, anyone with a different answer? 4? Anyone who says or any answer apart from 9? Online guys, what do you think? Yes, those who are sitting at the back. 6, okay. Yes, those who are sitting at the last, क्या आंसर आएगा? मुंह छुपाने से कुछ नहीं होगा, आंसर बताओ. Okay. Yes, anyone else with a different answer? Okay, let's see. Which operator will be solved first? So 4 plus 9 will remain same. Sorry, 4 plus 9 divided by 3 will give you 3 into 2 minus 1. Next what? 4 plus 6 minus 1. 4 plus 6, 10 minus 1 equals to 9. Answer will be 9. 6 कैसे आया? Okay. One last example. 8 divided by 1 plus 3 minus 9 into 2 greater than 23. इसमें सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं, या ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा. Online guys, true or false? What will be the answer? चलो, let's make it more complex. आप बताओ. चलो, let's solve. First thing, what will be solved? 8 divided by 1, 8 plus 3 minus 9. Let's move step by step. Okay, let's keep everything same. And 4. Okay, what next? 8 plus 3 minus 18 greater than 23 and 4. Okay, then what will be solved? 11 minus 18 greater than 23 and 4. Anything wrong here? What next? 11 minus 18 minus 7 greater than 23 and
4. Yes, any doubts? Okay, then minus 7 greater than 23. False. And 4. 4 क्या ट्रीट होगा? जो बोल रहे हैं फॉल्स आएगा, लॉजिक बताओ. 4 की वैल्यू क्या है? ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है. नॉन जीरो वैल्यूज आर ऑलवेज ट्रू. दिस इज अ करेक्ट रीजन. जब आप ट्रू फॉल्स करते हो तो उसको जब बाइनरी में करते 0 1 आता है कि नहीं आता? फॉल्स को कैसे डिनोट करते हैं? 0. ट्रू इज 1. एवरी नॉन जीरो वैल्यू विल बी ट्रीटेड एज ट्रू. तो बैक एंड पे क्या होगा? फॉल्स एंड ट्रू. आंसर विल बी फॉल्स. आंसर सही दे दिया, रीजन गलत है. Okay. Now I hope everyone is clear with the precedence. Every non-zero value will be treated as true. और and का आंसर तभी true आएगा अगर दोनों तरफ true होगा. And कैसे काम करता है? एक भी आंसर, एक भी आउटपुट फॉल्स हुई तो पूरा आंसर फॉल्स होगा. उसका कोई लेना देना नहीं है कि ट्रू कहाँ आ रहा है. तब ट्रू आना. अगर आप इस चीज को पहले सॉल्व करना चाहते हो, होगा ही नहीं. ये तो सिंगल वैल्यू है ना. ये देखो, ये तो सिंगल वैल्यू कंपैरिजन है ना. तो ये क्या करेगा? सिर्फ 7 और 23 की उठाएगा. ठीक है. बट अगर आप उसको दूसरे के साथ कंपेयर चाहते हो फिर पाइथन में जाओ. हाँ, सेम. दैट इज सेम इन C also, C++ also, Python also. Okay. All right. So with this, the theoretical part is over. Let's start with the case study. So what I did, I think I uploaded it yesterday in the Tuesday's class file. I have uploaded 2 case studies. Okay, case study 1 and case study 2. Okay, so let's start with the first case study. Let me save this file first. Okay, so there is a folder in your class file which calls case study 1. Guys, please stop talking. You have to discuss something, please go out. So we have case study 1. In this, there are 2 files. One is called create table orders, which is basically consisting of the create commands. You just have to execute it. Your table will be created and the data will be added. Okay. Second file is select queries, where you have certain set of questions that we need to perform on the table that will be created from this file. Okay. So all I have to do first thing is I have to just change the database name. So we have 2 steps to do that, 2 options to do that. First option is change the database name from here or use the use command. So here I can write okay. Now this is the statement for the create command. How many constraints are used? Not null, default, anything else? Only 2. Okay. And the values are added into the table using the insert statement. Okay, so let's execute this. Incorrect syntax near the default keyword. Where? Order date, date, not null, default. Done. Okay. So let's change it to PG batch 2. Refresh your database. Under the table section, we have TBL order table. Okay, let's see the contents of this table. Select everything from TBL order. Where have you seen this table? We have already worked with this table. Where we have worked with this table? Rick Hansen. Excel mein kara hai. Same table it is. Okay. Now what does the table contain? Reference number, where reference number has 3 parts. Country code, year in which the order was placed, and the order ID.
Okay. Then we have order dates. What is the default format of the dates? YMD. Okay. Customer name, categories of the purchase, what product has been bought, what was the sales, what is the profit. You can say profit consists of positive and negative values. Positive value means what? Profit. Negative value means loss. Okay. So I don't have to create two separate columns. So that means I am saving the extra space for one single column. Okay. Question number 1. What we need to do? Read the question and tell me what we want. This statement is already listing out all the orders, but I want it in the sorted order. Sorting has to be done on which basis, which column basis? Sales. So where should be order by? Before from, after from? After. So order by on the basis of sales. Which sort? If you don't mention it, so by default also it will be ascending. By default, ascending sort. Let's execute. Look at the output. Is the sales sorted in the ascending order? Yes. Okay. Now I want to sort the data in the descending order of sales. So select everything from the order table. Order by sales. Here you have to specify descending. Okay. Look at the sales now. Descending order. Question number 1 done. Any doubts in question number 1? Question number 2. What we want to do in the second question? How many total records are there in the table? How many records are there? Count थोड़ी करोगे, ये लिखा हुआ है 22 rows. Okay. So नहीं. Okay. So you want to display unique records. You want to see the data without duplicacy. Okay. So select everything from TBL order. This will give me the details of the table with and without duplicacies both. मतलब कि duplicacies के साथ आएगा. I want the data without duplicacy. So for without duplicacy, we have something called distinct. You don't want to select everything. You want to select distinct records from table order. That's it. Okay. Unique is a constant जो टेबल के ऊपर लगता है जब आप कंडीशन लगा रहे हो कि इसमें डुप्लीकेट चीजें नहीं एंटर होंगी. बट अगर मान लो आपने टेबल बना दिया जिसमें डुप्लीकेसी है, ठीक है, अब आपको वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को रिमूव करना है, तो क्या आप यूनिक लगाने बैठोगे? नो. सो ऑल यू हैव टू डू इज डिस्टिंक्ट कीवर्ड. Okay. And second thing is distinct keyword. Distinct is going to work on the entire row. वो एक कॉलम पे नहीं चलेगा. ठीक है. It means what? पहले वो ये रो सेलेक्ट करेगा, फिर देखेगा कि क्या ये रो पूरी की पूरी कहीं पे रिपीट हो रही है. अगर नहीं हो रही है तो दैट मींस इट इज डिस्टिंक्ट. ठीक है. So we were having 22 records originally. After executing this, how many records we have? 20. That means there were 2 duplicate records. लगेगा, हर बार लगेगा. आपको ये तो बताना है ना कि डिस्प्ले क्या कराना है. ये तो कॉलम नेम्स को डिफाइन करना है ना एस्ट्रिक. अगर ये डिफाइन ही नहीं करोगे तो प्रिंट क्या होगा? ठीक है. हाँ. Question number 2 clear to everyone? Question number 3. Which orders are giving loss to the company? So select everything from TBL order. Okay. Do you want to display all the 22 records? No. We want to display those records where I have loss. Who will define the loss? Profit. What will be the condition? Less than 0. Okay. So that means I have to do filtering. For filtering in SQL, what do we have? Where profit less than 0. Which type of conditional operator this is? Which comparison? Single value. Okay. You have a single column over here which is getting compared against a single value. तो ये काम कैसे करेगा? वो सबसे पहले ये वैल्यू उठाएगा, इसको कंपेयर करेगा, फिर नेक्स्ट वैल्यू उठाएगा, फिर कंपेयर करेगा. बट एक टाइम पे एक वैल्यू कंपेयर होगी. ठीक है. So there are 4 records which are giving us the loss. Okay. Question number 4.
Okay. What we want to do in the question number 4? Let's display the original data first. Now you can see there are different categories. You want to display the data for the category which belongs to technology. So again, it's a concept of filtering. So filtering ke liye what do we have? Where what should I write? Category column equals to technology. Now should I write technology in the lower case? Doesn't matter. SQL में doesn't matter. Rather I should not say SQL. In SSMS it doesn't matter. But अगर आप Amazon का Redshift यूज करोगे उसमें case sensitivity matters. ठीक है? So this is our data for technology category and we have 11 records. Done? What's there in question number 5? You want to display the orders that belong to technology where the products were sold at loss. So can I say question 3 and 4 is combined in question number 5? Okay. So what will be the statement over here? We are displaying all the records first. And then we are saying filter. 2 filters will be there. First one, where profit less than 0 and Excel में and function है, यहाँ पे statement है. Okay. And what should I write next? You will not use where again. Okay. And category equals to technology. So there is one record. जो टेक्नोलॉजी से भी है और जिसने लॉस भी दिया है. Any doubts in first 5 questions? Online guys, any doubt in first 5 questions? No. उसके लिए फिर आपको 2 अलग-अलग कमांड्स लिखनी पड़ेगी, एक डिस्टिंक्ट के लिए, एक यूनिक के लिए, फिर उनको कंबाइन करोगे यूजिंग अपेंड, यूनियन और यूनियन आल्सो. डायरेक्ट एक क्वेरी में नहीं. Okay, moving on to question number 6 then. Tell me what are we going to do? Generally, what I recommend to the candidate is before you start applying the logic, first get the original view of the database. ये actual में table क्या है? ठीक है? अब यहाँ से आपको easy हो जाएगा सोचना कि करना क्या है. ठीक है? So you want to display the orders? Which orders? What are these tables, phones, and appliances? These are products. Okay. So it's a filtering. Where? So there are 2 methods how you can do it. Where product is equal to tables. उसके बाद क्या लिखोगे? और कॉमा नहीं चलेगा. एंड लगाओगे? अगर एंड लगा दिया ना फिर प्रोडक्ट इज टेबल्स एंड प्रोडक्ट इज फोन्स एंड प्रोडक्ट इज अप्लायंसेस, वो सोचेगा कि पूरी एक रिकॉर्ड के अंदर तीनों चीजें हैं, जो कि पॉसिबल ही नहीं है. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड बाय दिस कीवर्ड ओवर हियर. ओके, सो इट विल बी और यू कांट से और फोन्स और अप्लायंसेस, वो नहीं चलेगा. आपको हर बारी कॉलम नेम देना पड़ेगा. ओके, और प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू फोन और product is equal to appliances. Done, but it has a shortcome. Shortcome ये है कि चलो अगर 2 conditions 3 conditions चेक करनी है, बार-बार कॉलम नेम लिख लोगे. अगर 10 conditions चेक करनी है तो 10 बार थोड़ी ना कॉलम नेम लिखोगे. तो who will come handy? In. Okay, so what you will do, the second part is second method, and this method is the efficient one. Select everything from order table where product in के साथ क्या यूज होता है? राउंड ब्रैकेट्स. ओके, अब इसके अंदर तीनों चीजें लिख दो. टेबल्स, phones, appliances within the quotations. Each will be within the quotation. ठीक है? So what kind of operator in is? Multi-value. This single product column का जो वैल्यू है वो किसमें चेक हो रहा है? 3 वैल्यूज के अंदर, और ये और की तरह ही काम करेगा. ठीक है?
So let's execute both the statements. What do you think will happen if I execute both the selects? It will give you two output screens. जितनी select run करोगे उतनी output screen बनेगी. ठीक है? Look at this. You have two output screens. First is giving you 6 records. Second is also giving you 6 records. Hence, it's verified. We can go with any of the methods. But second method is the efficient approach. Any doubts in question number 6? If you find that my pace is high, तो वहीं पे रोक देना. ठीक है? Question number 7. You want to list all the orders, but tables के बिना. Okay, tell me the condition. Where product not equal to tables. हो गया? कितने रिकॉर्ड्स आए? 20. प्रोडक्ट में देयर आर नो टेबल्स. यस. ठीक है? इसको करने का दूसरा तरीका बताओ. इनका उल्टा क्या होगा? नॉट इन. ठीक है? तो इफ यू हैव टू चेक मल्टीपल कंडीशंस, प्रोडक्ट हु इज नॉट टेबल्स, फोन्स और अप्लायंसेस, तो बार-बार नॉट इन तो नहीं करो, सॉरी, बार-बार नॉट इक्वल टू तो नहीं लगाओगे. तो वी हैव सेकंड मेथड, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल where product not in, and since इनके साथ हम ब्रैकेट्स लगाते हैं तो not in के साथ भी ब्रैकेट्स लगेंगे. ठीक है? not in tables. So this is also giving you 20 records. Done. Clear to everyone? Any doubts in question number 7? Okay, what's question number 8? From which of the orders company has gained profit, and that too by selling tables, phones and appliances. Okay, तो बताओ क्या लिखोगे यहाँ पे? Where product in tables, sorry, phones, appliances. This is the first condition. And profit greater than 0. Okay. Oh. Done. So there are 5 products. इनका मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट इन तीनों में से किसी में भी हो, किसी भी कैटेगरी में, वो चाहे टेबल्स हो, फोन्स हो, अप्लायंसेस हो, तीनों का रिजल्ट आएगा. नाउ लुक ओवर हियर, वी आर सेइंग प्रोडक्ट इन टेबल्स, फोन्स एंड अप्लायंसेस. ये प्रोडक्ट्स देखो, ऐसे प्रोडक्ट जो इन तीनों में से हैं, तीनों में से कोई भी एक हो जाए. ठीक है? तो फोन्स भी आ गए, टेबल्स भी आ गए, अप्लायंसेस भी आ गए. ठीक है? नॉट इन का मतलब क्या होता है? जो टेबल्स नहीं है उसके अलावा. आपको नहीं पता कि कितनी कैटेगरीज है, बट आपको इतना पता है कि आपको टेबल्स का डेटा नहीं चाहिए, तो आप वो थोड़ी ना लगाओगे प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू अप्लायंसेस. वो तो बहुत सारे फंक्शंस हो जाएंगे. तो इसलिए क्या है? नॉट है. आपने ये कंडीशन, ये इट्स वर्क्स लाइक नॉट इक्वल. ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज स्टिल सेम. दिस नॉट इक्वल टू विल वर्क ऑन वन सिंगल वैल्यू. तो अगर आपको दूसरी वैल्यू चेक करनी है, फिर आपको दोबारा क्या लिखना पड़ेगा? प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू. यहाँ पे वो चीज नहीं है. ठीक है? Any other doubt in question number 8? 9th. List all the order details where the sales are between 3,000 and 5,000. Meaning, both values will be inclusive or exclusive. Between जब use करते हो, start and end both are included. Okay. So where sales, क्या लिखोगे अब? एक मेथड है greater than equal to 3,000 and sales less than equal to 5,000. हो गया? दूसरा मेथड है यूजिंग बिटवीन. Where sales between, first value is 3,000, between के साथ क्या यूज होता है?
5,000. Done. So there are 10 records. Any doubts in question number 9? Okay. Question number 10. A part. It's basically a single question, but I have divided into 3 parts. What's the first part? अगर आपको 3000 इंक्लूड नहीं कराना है, then you have to go back to this month. फिर 3001 लिखना पड़ेगा. ओके हाँ कहाँ पे हाँ इक्वल टू हटा सकते. ओके व्हाट वी नीड इन 10th क्वेश्चन ए पार्ट. You want to display the details of all the orders where the customer name starts with J. Wild card. Okay. So as of now, it's displaying the details of all the customers. I want the details of the customers whose name starts with J. So filter. Okay. Where customer name अगर मैं लिख दूं is equals to J, क्या होगा इससे? कुछ भी नहीं आएगा. किसी का नाम J होगा क्या? No. ठीक है. तो equal to तो नहीं लगेगा. Second thing, you are not sure what is the complete name you are looking for, but all you know is it starts with J. अब J के बाद 0 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 1 कैरेक्टर हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, आपको नहीं पता. ठीक है. तो it will not be equal to, it will be like. आप पैटर्न मैचिंग कर रहे हो. Okay. Like what? Starts with J. Obviously text है तो quotations तो यूज होंगे. ठीक है. अब J के बाद आप यहाँ पे छोड़ दोगे इसको. ठीक है. अब J के बाद कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है? यू डोंट हैव एनी आइडिया. सो वेरिएबल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय परसेंटेज. परसेंटेज मींस J के बाद 0 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, 1 कैरेक्टर हो सकते हैं, n कैरेक्टर्स हो सकते हैं. ठीक है. बट फर्स्ट पोजीशन इज फिक्स्ड. ओके लेट्स एग्जीक्यूट. So there are 3 people. Look at the names. Jane, Joseph, Joel and Jonathan. कंडीशन क्या लगाओगे? लेफ्ट पे J लगा दे, उसके बाद लेफ्ट फंक्शन लगाओगे. लेफ्ट से तो J निकल जाएगा ना, बाकी कैरेक्टर्स कैसे निकालोगे? लगाना तो आपको फिर भी लाइक पड़ेगा. हाँ वो करेंगे क्वेश्चन आएगा. अभी रुक जाओ. वो एक्सेल में होता है. नहीं तब नहीं लगेगी. फिर आपको पहले लेफ्ट राइट करके उनको अलग करना पड़ेगा. Yes, any doubts in the first part? So what does this percentage basically do? Let's write a comment here. Percentage means there can be 0 or 1 or n characters after J. एक्सेल में हम लोग जब टेक्स्ट फिल्टर लगाते थे तब वहां पे फिल्टर था स्टार्ट्स विद, बिगिंस विद, सेम वे. ठीक है. बी पार्ट गाइस, व्हाट वी हैव टू डू इन बी पार्ट? You want to name the customers list of all the orders where the customer names either start with J or T. In नहीं लगेगा, like ही लगेगा. When you have a pattern matching, it will always be like. Where customer, sorry, क्या है? Cust name. Where cust name like starts with J or it can start with T. अब इन दोनों के बीच में और लगाना है, वो काम कौन करेगा? स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. योर फर्स्ट पोजीशन कैन हैव आइदर J और T. इनके लिए जब हम लोग राउंड ब्रैकेट यूज कर रहे थे तब वो और की तरह काम कर रहा था. वाइल्ड कार्ड में जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाओगे वो भी और की तरह काम करेगा. अगर मैं बोलूं मुझे उन सारे स्टूडेंट्स का डिटेल चाहिए जिनका नेम स्टार्ट हो रहा है A, S और U से, तो फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्या लिखोगे? ASU. कॉमा नहीं आएंगे बीच में. ठीक है. अब मैंने कंप्लीट कहां करा है? ओके नाउ व्हाट शुड बी आफ्टर J and T? डू यू नो दैट? नो. तो इसके बाद
नहीं, वो स्क्वायर ब्रैकेट्स मतलब और, यहाँ जे होगा, यहाँ टी होगा। करना ही क्यों है, बार बार लाइक लगाना ही क्यों है, वो कर सकते हो, कर सकते हो। ठीक है, चलो लेट्स एग्जीक्यूट। लुक एट द कस्टमर नेम्स, जेन, जोसेफ, थॉमस, जोल, जोनाथन, टॉम। डन। Any doubts in part A and part B? In part A, we were checking that it should always be starting with J. In part B, we are saying that it can be J or T at the first position. और लगाने का काम कौन कर रहा है? Square bracket. Okay, but remember this thing, square bracket will always be used with what? Like wildcard. Okay, C part. What we want to do in the C part now? इतना पार्ट तो क्लियर है सबको, ठीक है? तो फिल्टर विल बी व्हाट? वेयर कस्ट नेम लाइक इट इज आइदर जे और टी। इसको बंद करोगे? करना है, फर्स्ट पोजीशन है ना, ठीक है? अब जे और टी के बाद क्या, कितने कैरेक्टर्स आपको पता है? तो परसेंटेज लगेगा, बट एंड में आपको पता है क्या आएगा। अब यही चीज अगर आप बोलो कि लॉजिकल और एंड लगाना है, तो कितना बड़ा कोड बन जाएगा? कौन सा एंड? एंड की जरूरत क्यों है? जे और टी हो गया। अब इसको टेक्निकली मत ना इसके ऊपर जाओ कि एंड क्वेश्चन में लिखा है तो मेरे को एंड लगाना ही लगाना है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जे और टी आ गया, उसके बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी देयर, तो दैट इज द परसेंटेज। अब उसने एक और कंडीशन बोल दी कि लास्ट में डी लगेगा, तो रादर देन कि आप एंड लगाओ फिर दोबारा कस्टमर नेम लाइक लिखो, कंडीशन तो फिर भी रिपीट करनी पड़ेगी आपको ये सारी चीज। तो हमने क्या बोल दिया, लास्ट में डी है। तो व्हाट इज हैपनिंग, प्लीज अंडरस्टैंड, लास्ट पोजीशन के लिए कौन फिक्स्ड है? डी। फर्स्ट पोजीशन पे कौन फिक्स होगा? जे या टी, बीच में कुछ भी आ जाए, चाहे स्पेस हो, कॉमा हो, कुछ भी हो, ठीक है? तो ये लिखा तो है हम लोगों ने डी, डी के बाद हम लोगों ने कुछ और लिखा है, बात खत्म है वहीं पे। लास्ट में अगर दो ऑप्शन होते, हाँ मान लो अगर होता कि लास्ट में डी और ए हो सकता है, तो फिर डी और ए को ब्रैकेट्स में लगा दो। अगर लास्ट में डी है तो परसेंट डी करते, तो देयर इज ओनली वन पर्सन। लेफ्ट राइट लगाओगे फिर। यस, एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 10? क्या डाउट है? तो फिर जे को, तो फिर ब्रैकेट नहीं लगाओगे, सिर्फ जे लिखोगे। ब्रैकेट्स तभी यूज होगी अगर एक से ज्यादा वैल्यूज को चेक करना है। रुको, अभी मेरे को पहले अगले क्वेश्चंस कंप्लीट करने तो उसके बाद अगर डाउट आएगा फिर पूछना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? The orders where the characters at the second and third customer position name is A and R. आपको पता है सेकंड पोजीशन पे A है, थर्ड पोजीशन पे R है, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? नहीं पता, R के बाद कौन है? नहीं पता, ठीक है? तो व्हाट विल बी द कंडीशन? वेयर कस्टमर नेम लाइक, A से पहले कितनी वैकेंसीज हैं? 1, तो उसके लिए है अंडरस्कोर, ठीक है? तो पहली पोजीशन ब्लैंक है, ब्लैंक हमें नहीं पता वहां पे क्या है, तो उसके लिए है अंडरस्कोर। अंडरस्कोर विल ऑलवेज पॉइंट टू वन कैरेक्टर। अगर मान लो क्वेश्चन होता कि थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पे ए आर है, पहली तो आपको नहीं पता, तो 2 बार अंडरस्कोर आता, ठीक है? तो अंडरस्कोर एट द सेकंड पोजीशन यू हैव ए, एट द थर्ड पोजीशन यू हैव आर, इसके बाद है नहीं है मुझे नहीं पता, परसेंटेज, ठीक है? तो लेट्स राइट वन थिंग ओवर हियर, underscore means a single character occurrence, a single character position you can say, okay? Either of the characters, okay? Let's execute this code. So there are 3 people,
who have A and R at their second and third position. Karen, Darren, Harold. ओके हाँ, अब बताओ क्या डाउट्स है? एनी सिचुएशन जो आपके दिमाग में आ रही है तो उस केस में क्या वाइल्ड कार्ड बनेगा? हाँ, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, आप मुझे बताना क्या आएगा. दिस क्वेश्चन इज फॉर एवरीवन. कस्टमर्स whose name ends with X. बताओ क्या कोड बनेगा इसका? Where customer name like quotations के अंदर percentage X. ठीक है, उसके बाद customer name whose name starts with A, C and T and ends with A, I, Y. अब बताओ. Where customer name like. अब बताओ. Square brackets A, T, कॉमा आएगा बीच में, ब्रैकेट बंद होगा, उसके बाद फर्स्ट नेम का ये दिया हुआ है और फर्स्ट नेम में लाल दिया हुआ है. फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर है और फर्स्ट नेम में लाल है. नेम स्टार्ट भी ऐसे हो रहा है, एंड भी ऐसे हो रहा है. फर्स्ट नेम पे सॉरी, ब्रैकेट नहीं आएगा, कोटेशंस आएंगी. क्या? इसमें ये चलेगा नहीं, आंसर नहीं आएगा कोई भी. हाँ, तो फिर पहले लेफ्ट लगाओगे, पहले कॉलम बनाओगे जिसमें आपका फर्स्ट नेम निकलेगा, उसके ऊपर लाइक लगेगा, फिर डायरेक्टली नहीं होगा. ये चीज आपकी पूरी लगेगी कस्टमर नेम कॉलम के ऊपर जिसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों है. अगर आपको सिर्फ फर्स्ट नेम पे लगाना है तो फिर आपको पहले कस्टमर नेम से फर्स्ट नेम वाला डेटा निकालना पड़ेगा. हाँ, फिर लाइक किसके ऊपर लगाओगे? फर्स्ट नेम के ऊपर. लॉजिक ये सेम रहेगा. अगर इसी में कस्टमर नेम के इसमें सेकंड पेज में ए हो इसमें आर तो ऐड करेगा. क्या है, दोबारा बोलो. मैम इसमें सेकंड नेम में सेकंड पे तो ए है या जैसे बीएस कोई और सेकंड पेज पे ए है और एंड बी मतलब दोनों ही कॉन्सेप्ट ट्रिगर है. Yes, any doubts in wildcard? Okay. One last question before we go for the break. What's question number 12? क्या करना है क्वेश्चन नंबर 12 में? आपको टॉप 5 रिकॉर्ड्स प्रिंट कराने हैं, बट वो टॉप 5 निकलेंगे कहां से? तो यानी कि सेल्स को सॉर्ट करोगे, असेंडिंग डिसेंडिंग. ओके, तो सबसे पहले यू विल अप्लाई ऑर्डर बाय सेल्स डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, ब्रैकेट में 5 नहीं आएगा. यू कैन सी सेल्स आर सॉर्टेड. अब आपको सिर्फ पहले 5 रिकॉर्ड्स प्रिंट कराने हैं. ठीक है, तो ऑल यू हैव टू डू इज एस्टेरिस्क से पहले टॉप 5 लिखोगे. इन एसएसएमएस वी हैव टॉप, इन माईसीक्वल और ओरेकल वी हैव लिमिट. ठीक है, वहां पे टॉप नहीं होता, वहां पे लिमिट आएगा. और लिमिट कहां पे लगेगा? लास्ट में. यहां पे लिखोगे लिमिट 5. ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट. डन. Okay. Any doubts in the 12 questions that we have covered? Online guys, any doubt? Okay, so we'll start the class as 11:20 after the break.
नहीं, वो सब क्वेरीज का कॉन्सेप्ट होता है। जरूरी नहीं है कि पहले टेबल को एक्सट्रैक्ट करोगे फिर उसको दोबारा लेके आओगे, वो नहीं, सब क्वेरीज एक होता है कॉन्सेप्ट, सेलेक्ट के ऊपर सेलेक्ट कर जाते हैं। All right. So before we start with the next questions, any doubt so far in the order table case study? अगर मैं अपनी तारीख को ऐसे सब क्वेरी है, रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा, वो सब क्वेरी से होगा, सेलेक्ट के ऊपर सेलेक्ट लगेगा, तो अब जो कॉन्सेप्ट है वो सब क्वेरीज का लगेगा वहां, ठीक है। Okay, question number 13. What we want to do in the part A? In the question number 12, we have done top 5 orders. Now we want the bottom 5 orders. So if you want the bottom 5 orders, first of all, we have to sort the data in the ascending order. If you don't write the keyword, then also it means ascending, correct? Now, I don't want all the 22 records. I want the 5 records. Which 5 records? Top 5. Okay, there is no bottom keyword. Okay, so you have to control this thing with the help of order by. Okay, now as you can see in this table, we have sorted our records on the basis of sales. So this is a minimum sales, second minimum, third minimum, fourth minimum, fifth minimum. Now what I have to do? Top 5. Okay. Done. So these are the bottom 5 sales. What is the part B? What we want to display in the B part? That means order by will be ascending. Okay, but I don't want the bottom 25. I want bottom 25%. 22 का 25% कितना होगा? It will be in decimal 5 point something. So it will round off to 6. Ceiling value. Okay. So let's see how we can do that. First of all, order by sales in ascending order. It's going to give you all the 22 records. I want top 25%. So all I have to do is here you are going to write top 25%. There is not symbol, there is a keyword called percent. Okay. How many records are we getting? This is what we predicted. ठीक है, अगर कोई डेसिमल वैल्यू आ रही है तो वो सीलिंग वैल्यू लेगा उसका, ठीक है। एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 13? ओके, व्हाट्स 14th क्वेश्चन? No, 14th question. Display the order details with appropriate headers. Like we have customer name, it should be what? Customer name. Okay, so I am not going to go with the asterisk. I'm going to change the column names now. Okay, what's the first column? Ref number. I want to give an alias to that as equal. Okay, as reference number. This is the first column. Second column is what? ORD date as order date. Third column is cust name. Okay, I can write customer name with brackets if you want to include any other special character. Now writing the as keyword is optional. Syntax is what? Old column name as new column name. Second method is old column name space new column name. आप as नहीं भी लिखोगे तब भी column name change हो जाए, ठीक है? This is the second method. Then category will remain category only, so we are not going to change it. Then product is still fine. Okay, I can make sales as sales amount, and if you want to include a space in between, then make sure you write that complete text within a bracket. नहीं, आप चाहे लिख दो तब भी चलेगा. Okay, then we have, so we are changing all the column names with the help of an alias. The syntax is basically old column as new column, or you can write old column space new column. Okay, let's execute. It was DTE or what it was?
order. Okay, it's not date, it's DTE. Done. You can see all the column names have been changed. Okay, but are these changes permanent? No. अगर आप select star from table name लगाओगे तो पुराने column names दे देंगे. ठीक है, तो if you have to make the changes permanent, alter. Okay. What's question number 15? What do you want to do? You want to get all the records where profit is missing. Missing values in SQL is denoted by null. In Excel, missing values are denoted by blanks. Okay, and in Python, हमने Power BI में पढ़ा था NAT. Okay, so it will be again filtering. Where? अब कैसे चेक करोगे कि प्रॉफिट नल है या नहीं? Where profit is null. We have two conditions: is null, not null. Okay, if you want to check whether the profit is missing or not, I execute. I will sorry, full stop नहीं आएगा. I don't get any output. Reason is none of the profits are missing. Okay, अगर मैं यहाँ पे not null कर दूं तो सारे रिकॉर्ड डालें null के बिना. ठीक है, तो for this question it is null. Profit is not null. Profit not null. Any doubts in 15 questions? First 15 questions. हाँ, नहीं तो ये कॉलम्स डिस्प्ले नहीं होंगे. ठीक है, shall we start with the question number 16 then? आप कैसे भी लिख दो. Question number 16. What's the first part? How many orders are placed from each category? तो मेरे को ये बताओ कि फाइनल आउटपुट कैसा दिखेगा. How many columns will be there in the final output? 1, 2. First column will be category names. तो 3 categories है, technology, appliances and कुछ और भी था. ठीक है, उसके बाद second column में क्या आएगा? Count of orders. Okay, तो as of now this is the original table which is giving us all the columns. इसमें से मेरे को 2 columns बनाने हैं, तो asterisk sign will go. पहला कॉलम क्या बनेगा? कैटेगरी. ओके, व्हाट विल बी द सेकंड कॉलम? नंबर ऑफ ऑर्डर्स. नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगेगा? काउंट. किसके ऊपर लगाओगे? कैटेगरी पे लगा दो, रेफरेंस नंबर पे लगा दो, डेट पे लगा दो, किसी पे भी लगा दो. ठीक है, तो लेट्स अप्लाई ऑन रेफरेंस नंबर. काउंट ऑफ, एंड दिस इज व्हाट आई सेड, फंक्शंस विल ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड बाय पिंक कलर. ओके, काउंट ऑफ व्हाट? रेफरेंस नंबर. नाउ टेल मी वन थिंग, ये काउंट ऑफ रेफरेंस नंबर का जो कॉलम है ये पहले से था या आप बना रहे हो? हम बना रहे हैं, तो क्या कॉलम नेम खुद से आएगा? नो, तो आपको एलियास देना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं मे बी ऑर्डर्स काउंट. ठीक है, ओके. व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट, रीड द एरर. इट इज इनवैलिड. व्हाई? एरर में ही सॉल्यूशन है, एंड दिस वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास आल्सो. सेलेक्ट के अंदर अगर कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है नॉन एग्रीगेटेड एंड एग्रीगेटेड कॉलम्स का, तो क्या यूज होगा? ग्रुप बाय. ठीक है, ग्रुप बाय कहां पे आएगा? बिफोर फ्रॉम, आफ्टर फ्रॉम? आफ्टर. ग्रुपिंग किसके बेसिस पे करोगे? कैटेगरी. दैट मींस द नॉन एग्रीगेटेड कॉलम. ठीक है, so let's execute now. This is what we predicted, that there will be 2 columns. Okay, first column is showing you the category names, second column is showing you the number of orders. 4 plus 7 plus 11 22, और actually में भी 22 records थे. ठीक है, this is the first part. What is the second part? क्या समझ में आ रहा है स्टेटमेंट से? क्या करना है अब? अब एक तीसरा कॉलम बनेगा. उस तीसरे कॉलम में क्या आएगा? हर कैटेगरी की सेल्स अमाउंट. ठीक है, तो आई विल बी यूजिंग अ कॉमा हियर. अब टोटल सेल्स चाहिए, तो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन लगेगा? सम. किसके ऊपर लगाओगे? सेल्स. दिस इज अ कस्टम कॉलम, सो आई हैव टू प्रोवाइड द कॉलम नेम. तो चाहे एज ना भी लिखो, न्यू कॉलम नेम लिख दो, यानी कि टोटल अमाउंट. ठीक है, क्या ग्रुप बाय में कुछ चेंज होगा? नो.
So look at this. This is the total sales by furniture, office supplies and technology. Any doubts in question number 16? जैसे एस को बात किया था ऑर्डर कंप्लीट और वहां के बाद फिर हाँ कर सकते एज यूज ना करें तो ब्रैकेट में हो। हाँ कर सकते हो। मैंने दोनों इसलिए लिखे हैं ताकि आप किसी भी एक मेथड से कर सको, दोनों एक्सेप्टेबल है। Yes, any other doubt? Question number 16. Online guys, any doubt? Ma'am, these two tables reflect in our original tables or not? Orders No. count in a total amount. No, this is just the summary that you are preparing. If you will write the statement again, select everything from this table, you will get back your original table. Okay. Okay. Yes, any other doubt? Question number 17. What do you want to display now? Do we have months column? But we have date column. Date से months निकाल सकते हो? Yes. चलो, let's do that. So I'll be removing the asterisk sign. Final output में कितने columns आएंगे? How many columns will be there in the final output? Two. First one, month. Second, aggregate function, sum. Okay. So first column will be month. अब month निकालोगे कैसे? Using the month function. ठीक है? ये month function लगेगा किसके ऊपर? Order date. As months, comma. Sum of sales. Sum of sales as total sales. Do we need group by? Who will go in the group by? अब group by के अंदर aliases use नहीं होते। आप यहाँ पे months नहीं लिख सकते, आपको पूरा फंक्शन दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो aliases यूज कहाँ कर सकते हो फिर? ऑर्डर बाय के साथ, दैट्स इट। अगर आपको ये टेम्पररी कॉलम नेम कहीं पे यूज करना है तो वो सिर्फ ऑर्डर बाय में यूज होगा और कहीं यूज नहीं होगा। बाकी चीजों के लिए आपको ये जो फंक्शन ऊपर लिखा था ये फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, डन। रुको रुको, एनी डाउट्स इन दिस क्वेश्चन? ब्रैकेट में हम लोग इसलिए लिख रहे थे क्योंकि मैं यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं दे रही थी। आईएनसी रूल्स याद है ना, अंडरस्कोर के अलावा कुछ नहीं चलेगा। अगर कुछ और यूज करना है तो फिर ब्रैकेट यूज करेगा, बट अगर आप ये यूज कर रहे हो ऑलरेडी तो ब्रैकेट देने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। क्या करना है? Are there any customers with duplicate reference number? अब डुप्लीकेट रेफरेंस नंबर है या नहीं है कैसे चेक करोगे? क्या लॉजिक लगाओगे? डिस्टिंक्ट तो डुप्लीकेसी को रिमूव करेगा ना। आपको आउटपुट देना है, आपको एक्सप्लेन नहीं करना। हाँ, वेरी गुड। लॉजिक विल भी आप काउंट निकालोगे कि रेफरेंस नंबर, हर एक रेफरेंस नंबर कितनी बारी रिपीट हुआ है। ये रेफरेंस नंबर का काउंट निकालोगे आप। अगर तो इसका काउंट 1 है यानी कि ये यूनिक है, अगर उसका काउंट 2 हो गया दैट मींस इट्स डुप्लीकेट। ठीक है, अब बताओ काउंट निकालोगे कैसे? फिल्टर लगेगा वेयर काउंट ऑफ रेफरेंस नंबर इज मोर देन 1। ठीक है, वेयर भी नहीं लगेगा, हैविंग लगेगा। रुको, ओके, एक चीज करते हैं, एक समरी बनाते पहले। एक हो गया रेफरेंस नंबर, ठीक है। हर रेफरेंस नंबर का काउंट निकालना मुझे, तो पहला कॉलम आएगा रेफरेंस नंबर का, दूसरा कॉलम कौन आएगा? नंबर ऑफ ऑकरेंसेस। तो काउंट लगाओगे, काउंट किसके ऊपर लगेगा? रेफरेंस नंबर एज रेफ काउंट। लेट्स से डू वी नीड ग्रुप बाय? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं आएगी यार, ठीक है, तो यू हैव टू यूज ग्रुप बाय। ग्रुप बाय किस पे लगेगा? रेफरेंस नंबर। इतने कोड में किसी को डाउट? अब कहीं पे 2 आ रहा है क्या? अब इसको फिल्टर करना है। अब मुझे ये बताओ फिल्टर कौन से कॉलम पे लग रहा है, फर्स्ट या सेकंड? तो जब भी हम फिल्टर लगाते हैं एग्रीगेटेड कॉलम पे तो हैविंग लगेगा। दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। अब तक हम लोग सिर्फ वेयर यूज करते आ रहे थे, तो वेयर जब हम यूज कर रहे थे क्या मेरा कहीं पे एग्रीगेशन लग रहा था? नो, वेयर वर्क्स ऑन द नॉन एग्रीगेटेड कॉलम, हैविंग वर्क्स ऑन द एग्रीगेटेड कॉलम्स।
सिंस मेरे को कंडीशन सेकंड कॉलम पे लगानी है एंड द सेकंड कॉलम इज क्रिएटेड यूजिंग एन एग्रीगेट फंक्शन, सो इट विल बी हैविंग. अब हैविंग कहाँ आएगा, ग्रुप बाय से पहले या बाद में? हैविंग एलियस नेम्स कैंट बी यूज्ड इन दी हैविंग. तो यहाँ पे आपको फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा. Having count of reference number greater than 1. ठीक है. अब जब इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ऐसे 2 रेफरेंस नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं. तो आंसर आ गया, यही दिखाना था आपको. ठीक है. तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग? तो यहाँ पे एक टॉपिक बना देते हैं, वेयर वर्सेस हैविंग. ओके, फर्स्ट पॉइंट इज वेयर, or rather we should say common point or similarity. Similarity is both are used for filtering the table. Difference, used on non-aggregated columns, having used on aggregated columns. बट इंटरव्यू में इतनी स्टेटमेंट मत बोलना, उसको आपको उसको थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा कि वेयर इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू फिल्टर आउट द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल इफ देयर इज नो एग्रीगेट फंक्शन अप्लाइड ऑन द वेरिएबल, whereas having will be used when we want to filter out a record on the basis of some aggregated column. ठीक है. Any doubts in where and having? नाम इसको वैसे लिख सकते हैं जैसे आपने काउंट टेबल और के बाद ग्रुप ऑफ हैविंग लिखा है, उससे जगह वेयर नॉट काउंट रेफरेंस. एग्रीगेटेड कॉलम वेयर के साथ लगेगा ही नहीं. So we have discussed few of the operators here. So let's talk about one concept which is of date and time. Date and time functions. Okay. We have select everything from TBL order. Okay. I want to create new 3 columns in this table. Year, month, day. 3 parts बनाने हैं हम. ठीक है. तो asterisk means what? All the columns. इसके अलावा 3 और बनाने हैं. तो आप यहाँ पे क्या लगाओगे? Comma. Okay. First is month on order date as month number. ठीक है. Second will be year function. Year of order date as years. And lastly, day on the order date as days. Okay, let's execute this. We get the 3 columns. Okay, so you can clearly see over here, this date is 31st July 2012, 31st July 2012. Okay, same as that of Excel, nothing is different. Okay, all right. Select everything from TBL order. अब आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक मंथ नंबर का और एक मंथ नेम का. ठीक है. तो वी हैव मंथ फंक्शन टू गिव द मंथ नंबर, और एक उससे पहले एक और काम करते हैं. देयर इज वन फंक्शन विच इज नोन एज डेट पार्ट. व्हाट डज इट डू? इट रिटर्न्स द interval of the date, that is year, month, days. Okay, अभी हम लोगों ने ऊपर क्या देखा? that there are 3 different functions for month, year and day. अब ये आप काम एक फंक्शन से भी कर सकते हो, and that function is known as date part. Okay, so we have function called date part. All right. First thing is the order date. किसके ऊपर लगा रहे हो? Order DTE. And second, आपको कौन सा इंटरवल चाहिए? ठीक है. For example, if I pick up month as month.
Now let's see whether it's working or not. एक second. Yes. So interval will be first, column name will be second. Okay. अब सेम चीज अगर आपको ईयर्स के लिए करनी है तो सिर्फ आपको चेंज क्या करना होगा, मंथ की जगह पे ईयर्स, मंथ की जगह पे डेज, तो फिर अलग अलग लगाओगे, कॉमा देके आप डेट पार्ट फिर से लगाओ, ठीक है। बट द थिंग इज, मान लो किसी को नहीं पता है एक्सेल के बारे में, ठीक है, तो यहाँ तो वो ये 3 फंक्शंस को याद कर ले, यहाँ एक फंक्शन को याद रखो और इंटरवल चेंज करते जाओ, ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, ये 6 चीजें यूज होती है, ठीक है। तो लेट मी कंप्लीट दिस, आवर्स, मिनट्स, सेकेंड्स, आपको अलग अलग फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यस, द सिमिलैरिटी इज डेट पार्ट विल रिटर्न द न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट कैन बी रिटर्न्स न्यूमेरिक वैल्यू, ओके। इसके बाद वी हैव अनदर फंक्शन, ओके, display the month names. This is what you want to do. Select, let's say, order date from table order. अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगी क्या आउटपुट आएगी, सिर्फ एक कॉलम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। अब इस कॉलम में से आपको मंथ नंबर्स निकालने हैं, तो आप डेट पार्ट यूज कर सकते हो, डेट पार्ट, मंथ, ऑन, ऑर्डर डेट, ठीक है, एज मंथ नंबर। अब इन मंथ नंबर्स को आपको मंथ नेम्स में बनाना है, तो वी हैव समथिंग कॉल्ड फॉर्मेट। कहां पड़ा था फॉर्मेट? पावर बीआई, एक्सेल में तो यू हैव टेक्स्ट, ओके, एक्सेल में यू हैव टेक्स्ट फंक्शन, पावर बीआई में वी हैव फॉर्मेट फंक्शन। तो सेम वे, किसको फॉर्मेट करना है? ऑर्डर डेट। किस चीज में फॉर्मेट करना है? ओके, एज मंथ नेम्स। डन। हाँ, फॉर्मेट कर सकते हो, सेलेक्ट ऑर्डर डेट का फॉर्मेट मतलब कर सकते हो। वो दूसरा उसको जरूरत नहीं, डेट पार्ट वो तो मैंने जस्ट ऐसे ही बना दिया कि मंथ नंबर और नेम्स अगर दोनों लेके आने हैं तो क्या क्या यूज, बट इफ यू डोंट वांट द मंथ नंबर देन यू कैन ओनली मूव विद द फॉर्मेट, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन था ना कि मंथ नेम्स अगर डिस्प्ले कराने हैं तो फॉर्मेट से। अच्छा, वन मोर थिंग, कैन आई सॉर्ट मंथ नंबर्स? तो ऑर्डर बाय लगा सकते हैं। What did I say? Aliases can be used in order by. अब यहाँ पे आपको डेट पार्ट पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें डेट पार्ट का एलियस क्या है? मंथ नंबर, तो यहाँ पे यू कैन यूज मंथ नंबर। डेटा सॉर्ट हो गया, ठीक है। अब मान लो कि आपको मंथ नेम्स भी सॉर्ट करने हैं, मंथ नंबर नहीं सॉर्ट करने, मंथ नेम सॉर्ट करने हैं, तो पहला मंथ कौन आएगा? हाँ, एस का वैल्यू ए लेटर से स्टार्ट होगा, अप्रैल या अगस्त? अप्रैल, ए पी, ए यू, तो पी पहले आता है, ठीक है। लुक एट दिस, अप्रैल का डेटा नहीं है क्या यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। तो इफ यू आर सॉर्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ मंथ नंबर इट विल बी 1 2 3 4, दैट मींस जन फेब मार्च अप्रैल। बट अगर मंथ नेम्स है उसको सॉर्ट करना है तो वो एस का वैल्यू पे ही होगा, ए बी सी डी ई एफ। आप जनवरी फरवरी नहीं कर सकते, ठीक है। एनी डाउट्स हियर? यस गाइस, एनी डाउट? मंथ नेम सॉर्ट के बारे में असाइनमेंट सेटिंग लाइन टेक्स्ट कैरेक्टर के साथ सेटिंग एस की वैल्यूज ए बी सी डी के हिसाब से करेगा, वो तो हो ही जाएगा सॉर्टिंग। आप मंथ नंबर, ये देखो जब हम लोगों ने मंथ नंबर पे करा था, जब मंथ नंबर पे सॉर्ट करोगे तो पूरा रिकॉर्ड ही सॉर्ट होगा ना। फिर ऐसा तो नहीं है कि अकेला मंथ नंबर ही सॉर्ट हो गई, तुमने एक्सेल में भी देखा था, पूरी रो चेंज होती है, ठीक है।
बट हाँ, अगर किसी ने सिर्फ मंथ नेम्स लिखे हैं, मंथ नंबर नहीं करे हैं, फिर कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। गेट दी करंट डेट। एक्सेल में क्या था हमारे पास? टुडे एंड नाउ। व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड नाउ? सिर्फ टाइम देते हैं, डेट एंड टाइम बोथ. टुडे गिव्स यू डेट पार्ट. तो इन सीक्वेल वी हैव समथिंग कॉल्ड गेट डेट. हमारे पास नाउ और टुडे नहीं है. ठीक है, तो आई राइट वन पॉइंट और कोड भी लिखते हैं सीधा. सेलेक्ट गेट डेट एज करंट डेट. दैट्स इट. क्या मैं करंट डेट किसी टेबल से निकालती हूँ? नो, तो फ्रॉम की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. दूसरी बात, क्या आपका ये फंक्शन कोई भी फंक्शन सेलेक्ट के बिना चलेगा? नो. ठीक है, तो यू वांट टू डिस्प्ले द करंट डेट एंड, अच्छा ये यूज नहीं कर सकते हो सिंस इट्स एक्टिंग एज अ कीवर्ड. What's the output of get date? It will return the date also, time also. Okay. What's the timestamp? Hours, minutes, seconds, milliseconds. मिली का आगे होता है ना. ठीक है. What's the date format? YMD. डिफॉल्ट हमेशा YMD रहेगा. ठीक है. ओके. सेलेक्ट ऑर्डर डेट फ्रॉम TBL ऑर्डर और साथ में मैंने करा दिया गेट डेट एज करंट डेट. लुक एट द आउटपुट. ये सारी ऑर्डर डेट्स आई है ऑर्डर टेबल से. व्हाट्स इन द सेकंड कॉलम? करंट टाइम. इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करके आपको ये बताना है कि कितने साल पुराना ऑर्डर है. क्या करोगे अब? ये सब क्वेरी चलेगी बट एनीवे लेट्स ट्राई. डेट डेफ 3 पैरामीटर्स एक्सेप्ट करता है. स्टार्ट डेट, एंड डेट, इंटरवल. ठीक है. व्हाट्स द स्टार्ट डेट? ऑर्डर डेट. व्हाट्स द एंड डेट? आज की डेट, दैट इज गेट डेट. एलियस यूज नहीं होगा. एलियस इज ओनली यूज इन ऑर्डर बाय. ठीक है, तो फंक्शन दोबारा लिखोगे. किसके बेसिस पे डिफरेंस चाहिए? ईयर्स, मंथ्स, डेज, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स. तो हम लोग ईयर्स कर सकते हैं. लेट्स कॉल इट एज ऑर्डर एज. लेट्स एग्जीक्यूट. नहीं, एक सेकंड रुको. नहीं, वो वहां पे नहीं है. I think interval is first. Wait. हाँ, interval should be the first parameter. ठीक है. Now 2023 minus 2012, 11. आप दो डेट्स का डिफरेंस निकाल रहे हो बट किस बेसिस पे? ईयर. तो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स क्रिएट 3 कॉलम्स. ईयर एज, कॉमा, डेट डेफ अगेन, month, order date, comma, get date as month age, comma, date def, day, order date, get date as day age. Look at this. If I talk about the first order, ये 11 साल पुराना है. कितने मंथ्स? 33. एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? तो 11 साल में कितने होंगे? 12 11 सा 130. तो 133 कहां से आया? तो ये ईयर के ऊपर कैलकुलेट नहीं होगा, ये कैलकुलेट होगा मंथ पार्ट के ऊपर. ये जुलाई है,
ये अगस्त है, एक महीना ज्यादा हो गया ना, ठीक है, एंड डेज, ठीक है। अगर एक permanent table सारे करने में तो सब not टेबल है। अगर आपको ये न्यू कॉलम ऐड करने, फिर ऑल्टर करके ऐड कॉलम करते जाना पड़ेगा। सर नीचे ये नो है और वन आ रहा है देखो हैं। क्या है? मैम एक बार फिर से बता दो ये वाला। व्हाट इज डेट डेफ फंक्शन? दो डेट्स का डिफरेंस निकालना है, ठीक है, बट यू हैव द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग कि किस इंटरवल के बेसिस पे डिफरेंस निकालना है, ईयर, मंथ, डे, ठीक है। अगर तो आपको ईयर के बेसिस पे डिफरेंस निकालना है तो 2012 और 2023 माइनस होंगे। अगर आपको उसको मंथ में कन्वर्ट करना है तो ऐसा नहीं है कि ईयर्स आपके मंथ में कन्वर्ट होंगे, नो, कन्वर्ट किसके बेसिस पे होगा? मंथ पार्ट फ्रॉम बोथ द डेज, ईयर भी कंसीडर होगा, मंथ पार्ट भी कंसीडर होगा, ठीक है। और डेज के लिए तीनों चीजें कंसीडर होंगी, डेज भी कंसीडर होंगे, मंथ्स भी कंसीडर होंगे, ईयर भी कंसीडर होगा, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? बोलो। उसमें गेट डेट जब यूज किया एलियास के लिए आपने एज करंट डेट भी लिखा पूरा मतलब बाद में लिखा था। मैंने क्या बोला अभी? एलियासेस सिर्फ ऑर्डर बाय में ही चलते हैं, क्या मैं कहीं पे ऑर्डर बाय यूज कर रही हूँ? हाँ, ये करके आपने करंट डेट लिखा मतलब बाकी में लिखा था ऑर्डर डेट गेट डेट एज का पूरा लिखा था अपना आगे तक। अच्छा बोल रहे यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? हाँ ये जो करंट डेट है ये एलियस है इस चीज का, हाँ। ठीक है। पहली बात, यहाँ पे एलियस नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर एलियस नहीं आएगा तो क्या यूज करोगे? सिर्फ फंक्शन। आप चाहो तो एज यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा जब एलियस यहाँ पे किसी काम का ही नहीं है तो मैं खामखा अपना कोड क्यों बड़ा करूं? आप लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसकी, तो चल जाएगा। किस वजह से? पीछे यूज किए थे जब अकेला कॉलम है तब तो आप एलियस चलाओगे, बट अगर वही कॉलम किसी और चीज में यूज हो रहा है ऑर्डर बाय के अलावा तो एलियस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप एलियस को यूज ही नहीं करने वाले थे, ठीक है। ओके, वो डेज में पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, मंथ्स में नहीं आएगा वो, बट डेज में इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, मंथ्स में 12 भी आएगा, क्योंकि आप डिफरेंस मंथ्स पे कर रहे हो ना फिर। Okay, few more questions on this order table. What is the first question? क्या करना है फर्स्ट क्वेश्चन में? List all customers in the ascending order of category and descending order by sales. That means you have to apply sorting on two columns और दोनों columns पे अलग अलग sort लगेगा, ठीक है। This sheet I haven't shared, आज क्लास फाइल के साथ ही अपलोड हो जाएगी। I'll upload the blank file also and the solution file also, ठीक है। Okay, select everything from TBL order. Okay, अब बताओ क्या करना है? What we need to do? ये तो एक्चुअल डेटा आ गया, इसके बाद where do you want to filter anything? Order by, क्या ऑर्डर बाय करना है? किसको सॉर्ट करना है? कैटेगरी, विच ऑर्डर? असेंडिंग। सेकेंड कॉलम क्या है? सेल्स, किसके बेसिस पे? ये करना, ओके। सो लेट्स एग्जीक्यूट, लुक एट द आउटपुट। कैटेगरीज आर सॉर्टेड इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि अल्फाबेटिकली वाइज, पहले एफ आया, फिर ओ, फिर टी, ये सॉर्ट हो गया। अब क्वेश्चन का मतलब क्या है? एक्सेल में हम लोगों ने पढ़ा था ना सॉर्टिंग विद इन द लेवल, ऐड लेवल करके, सेम चीज, ठीक है। आपने पहले फर्नीचर का डेटा लिया, फर्नीचर का डेटा आपका फर्दर सॉर्टेड है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, देन कम्स योर ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज डेटा इज फर्दर सॉर्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, so this is sorting within the sorting, okay. What is question number 2?
क्या करना है? Like this stage. Combination of category and product and that too in the ascending order. Select distinct क्या? एस्ट्रिक नहीं लगाओगे, अब लगाओगे कैटेगरी और दूसरा कौन आएगा? प्रोडक्ट। ठीक है, अब जब मैंने इतनी चीज को एग्जीक्यूट करा, लुक एट द आउटपुट। अब आपको डेटा सॉर्ट करना, ऑलरेडी ये सॉर्टेड है, मतलब कैटेगरी तो सॉर्टेड है, बट क्या प्रोडक्ट सॉर्टेड है? तो फिर क्या लगाओगे? ऑर्डर बाय कैटेगरी इन द असेंडिंग ऑर्डर एंड प्रोडक्ट आल्सो इन द असेंडिंग ऑर्डर, both are in ascending. Any doubts in question number 2? Look at the data. This is a furniture data. जो further उसके products sorted है, C and T. Then you have office supplies, further sorted. Technology, further sorted. ये करना है। और हर जगह combination unique है। क्या कहीं पे combination duplicate हो रहा है? No. And who took care of that? Distinct. ठीक है? Any doubts in question number 2? Online guys, any doubt? नहीं, मत लिखो। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है। जो पहले लिखोगे, अगर आपने कैटेगरी पहले लिखा है तो कैटेगरी फर्स्ट सॉर्ट होगा, अगर प्रोडक्ट लिखोगे तो प्रोडक्ट पहले सॉर्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। Count of customers buying particular product in technology and furniture category for the year 2011 and 2012. अब ये बताओ कि फाइनल टेबल में कॉलम्स कितने होंगे? What are the 3 columns? बताओ। तो कितने कॉलम्स बने? 4 कॉलम्स क्या है? कॉलम नेम्स बताओ। दो कॉलम्स ही बनने चाहिए। पहला कॉलम आएगा कैटेगरी का, हाँ, या प्रोडक्ट्स का ले लो, आप दोनों में से किसी को ले लो, और सेकंड कॉलम बनेगा काउंट का। ईयर्स क्यों डिस्प्ले कराने? ईयर तो फिल्टर में जाएगा ना, ईयर्स क्यों डिस्प्ले कराओगे? उसने सेपरेटली कहाँ बोला है? ठीक है, हाँ, अगर आप ईयर सेपरेटली दिखाना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो। व्हाट इज गोइंग ऑन? एसी ऑन करना है करो, नहीं तो बंद कर दो। 5 मिनट से ये डिस्कशन चल रही है। ओके, टेल मी द क्वेरी, क्या लिखोगे? पहला कॉलम कौन आएगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट कॉलम? प्रोडक्ट। व्हाट विल बी द सेकंड कॉलम? काउंट ऑफ व्हाट? किसी पे भी लगा दो, ऑर्डर डेट कर दो, रेफरेंस नंबर कर दो, कैटेगरीज कर दो, किसी पे भी कर सकते हो। लेट्स गो ऑन रेफरेंस नंबर, ऑर्डर्स काउंट। ओके, उसके बाद where technology and furniture are the categories, where the category in first is technology, second is furniture. Okay, उसके बाद सेकंड कंडीशन भी लगानी है ना ईयर की, एंड सेकंड कंडीशन विल बी ईयर ऑफ ऑर्डर डेट इन 2011 2012। ठीक है, अब क्या मिसिंग है? ग्रुप बाय। कहाँ लगेगा? वेयर से पहले या बाद में? ग्रुप बाय किस पे लगेगा?
प्रोडक्ट। कैटेगरी पे क्यों लगेगा? सेलेक्ट में क्या लिखा हुआ है? 2 कॉलम्स है ना। Look at the output. So this is a combined data for 2011 and 2012. अब अगर आपको इस डेटा को फर्दर सेपरेट करना है 2011 का अलग 2012 का अलग, तो क्या करोगे? तीसरा कॉलम शो होगा। तो मान लो प्रोडक्ट के बाद आपने यहाँ पे कॉलम लगा दिया ईयर का, ईयर ऑन ऑर्डर डेट एज ईयर्स। और कहाँ पे चेंज आएगा? डू वी नीड टू चेंज समथिंग एल्स? ग्रुप बाय। सेलेक्ट में कितने कॉलम्स यूज हो रहे हैं? 3। एग्रीगेटेड कितने हैं? ईयर एग्रीगेट फंक्शन है 1। तो ग्रुप बाय में 2 कॉलम जाएंगे, एक प्रोडक्ट जाएगा, एक ईयर जाएगा। कैन यू यूज एलियस नेम? नो। अगर एलियस नेम अलाउड होता तो यहाँ पे ईयर्स की आपको सजेशन आनी थी। ठीक है, तो अगेन सिंस ग्रुप बाय है तो आपको फंक्शन दोबारा लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स सी, लुक एट द डेटा। मशीन्स ने 2011 का एक ऑर्डर था, मशीन्स का 2012 में 2 ऑर्डर्स थे। डन। अब मान लो आपको कैटेगरी नेम्स भी बताने हैं कि मशीन कौन सी कैटेगरी से आ रहा है, टेक्नोलॉजी से आ रहा है या फर्नीचर से आ रहा है। अब क्या करोगे? आपको एक और कॉलम यहाँ पे शो करना है जो ये बताएगा कि ये प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी का है, टेक्नोलॉजी का या फर्नीचर का। तो दैट मीन्स यहाँ पे कैटेगरी डिस्प्ले करोगे। और कहाँ पे चेंज आएगा? ग्रुप बाय में। डन। सब आएंगे, सब आएंगे। मैम इस डेटा में तो खाली 11 का होगा ना, अगर 2 में हो 11 और 12 11 और 12 भी तो है। मतलब कि मैम जैसे एक कैटेगरी है ना टेक्नोलॉजी कैटेगरी वाइज तो समझ लो तो कैटेगरी वाइज? कैटेगरी वाइज क्या? मैम अगर 2 इयर्स में डेटा हो तो वो कैसे चाहिए कि अभी भी 11 और 12 का अलग अलग तो ईयर हटा दो वहां से, ईयर चले जाएंगे। अगर दोनों ईयर्स का कंबाइंड डेटा दिखाना है तो ईयर्स को रिमूव कर दो कॉलम को। तो कंबाइंड डेटा सबसे पहले वही तो किया था हम लोगों ने। बताओ क्या पूछ रहे हो? मैम जैसे अगर तो 2 दिन कोई भी कैटेगरी हो उसका टोनी पेज में डेटा टाइप का रहता है तो क्या अलग अलग शो हो रहा है कि इयर्स में तो खाली एक ही बार ही शो हो रहा है ना कोई क्यों? ये है तो है टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर? एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 3? द मेन लॉजिक इज सेलेक्ट के साथ जितने भी कॉलम्स लिखोगे, ठीक है, उसमें से अगर एक एग्रीगेटेड है तो बाकी जो पीछे बच जाएंगे वो ग्रुप बाय में जाएंगे, वरना एरर आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। What do you want to do in question number 4 now? What is max, min, average? What category of functions these are? Aggregate. किसके ऊपर लगाना है? और सेल्स किसकी कैलकुलेट करनी है? कस्टमर, ईच प्रोडक्ट। तो फाइनल आउटपुट में कितने कॉलम्स होंगे? हैं? बताओ। कैटेगरी या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट, मैक्स, मिन, एवरेज, कस्टमर का। अब मान लो अगर सेल्स भी लगाना है तो यू डोंट हैव टू बी सरकास्टिक ऑल द टाइम। ठीक है, अब बताओ, सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम टीबीएल ऑर्डर। ओके, फर्स्ट कॉलम विल बी योर प्रोडक्ट, सेकेंड कॉलम विल बी, दो कॉलम्स और ऐड कर देते हैं, एक कर देते हैं सम ऑफ सेल्स एज टोटल सेल्स। Second will be max of sales as max sales. Then min of sales as min sales and average. We have AVG. In Excel, what was the function name? Excel, average निकालने के लिए. Average. Okay. In Power BI, function का name क्या था? Average. ठीक है, but in SQL we have ABG. Okay, average of sales as average sales. कुछ और ऐड कर सकते हैं क्या?
नहीं ठीक है. Count of, can I do count of sales? आपको कस्टमर काउंट बताना है. कस्टमर काउंट, सॉरी, यू कैन अप्लाई काउंट ऑन कस्टमर नेम, यू कैन अप्लाई काउंट ऑन रेफरेंस नंबर, यू कैन अप्लाई काउंट ऑन सेल्स. किसी पे भी लगा दो. हाँ, किसी पे भी लगा दो. ऑर्डर डेट पे लगा दो, जेंडर पे लगा दो, जो भी है जिस पे भी लगा दो. ठीक है. So let's apply on sales only as sales count. What is left now for me to do? Group by. Okay. Since we are using lot of aggregate function, product is non-aggregated, so it has to go in group by. Anything else we need to do? Look at the output. 2 plus 3, 5, 5 plus 4, 9, 9 plus 2, 11, 11 plus 2, 13, 13 plus 6, 19, 20, 21, 22 और original 22 records थे. ठीक है. तो accessories की what is the total sales, what was the max sales, what is the minimum sales, average कितना है और total number of orders कितने थे. तो इसके सब कैटेगरी प्रोडक्ट दिखा दो, प्रोडक्ट को सेलेक्ट में लेके तो ग्रुप बाय करना. कैटेगरी एंड प्रोडक्ट दोनों दिखाने हैं. नहीं, ऐसे ही इसके अंदर प्रोडक्ट आ गए जो सेल हुआ है. तो एक्सेसरीज के अंदर प्रोडक्ट, इसमें डेटा नहीं है वाला. तब इसकी आपको दो ऑर्डर्स का डिटेल दिखाना है आगे. मतलब जैसे इसमें लिखा है कि एक्चुअली से हुई है दो क्वांटिटी में, तो जो दो क्वांटिटी जो प्रोडक्ट होंगे सब कैटेगरी के अंदर से. आप उसका ऑर्डर आईडी दिखा दो, बट इसमें तो डेटा ही नहीं है ना वो दिखाने के लिए. वैसे नहीं. हाँ, वो सब क्वेरी से करोगे ना फिर, या फिर सेलेक्ट में आप आगे उसका इन्फॉर्मेशन लिखो, प्रोडक्ट आईडी लगा दोगे आप. तो ग्रुप बाय में नहीं. हाँ, वो ऑब्वियस है. अगर आप यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नेम या आगे कुछ भी लगा रहे हो तो उसकी इन्फॉर्मेशन ग्रुप बाय में भी ऐड है. ओके, क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन. क्या करना है? सेल्स काउंट डेटा. Display the data for only those products which are bought by more than one customer. What will be the logic? ऐसे प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है जो एक से ज्यादा कस्टमर्स ने खरीदे. काउंट किसके ऊपर लगाओगे? एस्ट्रिक की जगह पे क्या आना चाहिए एज पर टू द क्वेश्चन? क्या मुझे सारे कॉलम डिस्प्ले कराने हैं? तो बताओ. सेलेक्ट प्रोडक्ट, सेकंड क्या होगा? सेल्स. काउंट आएगा ना. काउंट किसके ऊपर लगेगा? किसी पे भी लगा दो, सेल्स पे लगा दो, या आप कस्टमर पे भी लगा सकते हो. काउंट और उसने बोला ना मोर देन वन कस्टमर, तो क्वेश्चन के साथ जाने के लिए कस्टमर पे लगा देते हैं. और दो किसी और कॉलम पे लगाओगे आंसर स्टिल सेम आएगा. ठीक है. एज कस्ट काउंट. अब क्या करना है? सबसे पहले तो ग्रुप बाय लगाओ. ये सारी इंफॉर्मेशन आ गई. अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगर मैं अप्लायंसेस की बात करूं तो सिर्फ एक कस्टमर ने खरीदा. क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसा प्रोडक्ट जो एक से ज्यादा कस्टमर्स ने खरीदा. अप्लायंसेस को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा कस्टमर ने खरीदे. ठीक है. तो इसके लिए अब आप क्या करोगे? आगे फिल्टर करना है ना. हैविंग लगेगा. आपको फिल्टर करना है सेकंड कॉलम को. सेकंड कॉलम बना है एग्रीगेट कॉलम के साथ, तो वेयर नहीं लगेगा, हैविंग लगेगा. ग्रुप बाय से पहले या ग्रुप बाय के बाद? हैविंग व्हाट? एलियस अगेन नहीं चलेंगे, तो फंक्शन नेम आपको दोबारा लिखना है. कस्टमर नेम ग्रेटर देन 1. आपको ये 1 की अलावा वाला ही डेटा दिखाना था ना, तो कंडीशन तो ग्रेटर देन 1 ही लगेगा. डन. एनी डाउट्स इन क्वेश्चन नंबर 5? अगर लॉजिक लिखने में प्रॉब्लम होता है तो अपने लॉजिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया करो, 2 से 3 पार्ट्स में. डायरेक्टली ये चीज सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. पहले इतना काम करो, इसका क्या मतलब है? ठीक है. कंडीशंस को बाद में भी लगा सकते, पहले समरी बनाया करो. ओके. लास्ट क्वेश्चन.
क्या करना है अब? We have to perform the sorting. Descending sort लगाना है किस कॉलम के ऊपर? कस्टमर अकाउंट. उसके बाद एवरेज सेल्स अमाउंट के ऊपर भी सॉर्टिंग लगेगा और डिसेंडिंग लगेगा. बट सॉर्टिंग करने से पहले समरी बनाओ. क्या समरी बनेगी? अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो प्रोडक्ट वाइज काउंट एंड एवरेज निकाल लो या कैटेगरी वाइज कर लो. ठीक है, लेट्स गो विद प्रोडक्ट वाइज. ओके, तो प्रोडक्ट वाइज क्या निकालना सबसे पहले? काउंट ऑफ कस्टमर्स. काउंट ऑफ कस्टमर्स के लिए मैं काउंट लगा सकती हूँ कस्टमर नेम के ऊपर. ठीक है, या रेफरेंस नंबर पे लगा दो एज कस्टमर काउंट. थर्ड कॉलम क्या है? एवरेज लगेगा किसके ऊपर? सेल्स, एज एवरेज सेल्स. इसके बाद अब क्या करना है? ग्रुप बाय. ग्रुप बाय में कौन जाएगा? प्रोडक्ट. ओके, दिस इज अ समरी. प्रोडक्ट वाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्स और द कस्टमर काउंट एंड एवरेज सेल्स. अब क्या करना है? सॉर्टिंग. तो ग्रुप बाय के बाद कौन आएगा? ऑर्डर बाय. ऑर्डर बाय किसके बेसिस पे करना है? कस्टमर काउंट. तो रादर देन फंक्शन, अब यहाँ पे मेरा एलियस नेम चल जाएगा. सॉरी, एक सेकंड. ऑर्डर बाय, कैन यू सी द एलियस नेम शोइंग अप? ठीक है, कस्टमर काउंट डिसेंडिंग ऑर्डर कॉमा, you can see the alias name here also. अगर आप बोलो कि यहां से हटा दो कीवर्ड और दोनों डिसेंडिंग हो जाएं, नो, नहीं होगा. असेंडिंग डिसेंडिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ये कीवर्ड आएगा. ओके, डन. Products sorted on the basis of customer count in the descending order and also on the basis of averages. ठीक है, with this ये टेबल ऑर्डर वाली केस स्टडी is finished. Okay, so that's it for today. Tomorrow we are going to start with subqueries and join.